Now today, let's start with chapter number 2, Table in MS Access 2009. In this chapter, I will tell you about Access, what is table in Access, what are its components and views of the table, and how you can create a table and you can enter data. अगर आपको records add करने तो how you will do, editing कैसे करोगे, deleting in records. Then we will study about sorting and modifying and searching in table. Now, in previous class, we have discussed the basic concept of database and various objects of MS Access 2009 data. What is a table? A table is a basic component of database in which we enter data. जिसमें हम data को क्या करते हैं? Enter. What is table in Access? A table in a database object which is used to share information in an organized way. It consists of rows and columns. A database have one or more. इसको हम किस लिए यूज करते हैं? इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, और यहाँ पे रोज और कॉलम दोनों होते हैं. It has one or more. What are the components of table? First is field or attribute. The column in a table is known as field or attribute. A field is a part of record. Field क्या एक record का part है, which consists of single piece of data. A field store one type of information and about all the objects or items. Every field has a data type जो किसको determine करता है कि type of value जो stored हुई है वो क्या. Data types are used to declare the field of a table. ये क्या declare करता है? Field of table. ये determine करता है type of data इनमें किस type का data है. ठीक है, जैसे ही हम data को define कर लेते हैं, we cannot enter a different type of data. आप different type of data को enter नहीं. If we try to do so, error message will be displayed. अगर आप ऐसा करोगे भी तो एक error message जो है वो display. Field data type, the various data types are available in Access are as like we have short text. It is a short text or combination of text or numbers that does not require calculation, such as addresses, phone number. The field with this data type can have a maximum of 255 characters. Maximum कितने character होता है? 255. Now, long text, it is used to store lengthy text up to 65,536 characters. It can be used for storing detailed information. हम इसमें detailed information को share कर सकते हैं, like invoices of a book or a patient medical history. Then we have date and time. It stores date and time value. You can display dates and time in various. आप डेट एंड टाइम्स को वेरियस फॉर्मेट में क्या कर सकते हो? डिस्प्ले कर. नंबर, इट इज यूज्ड फॉर न्यूमेरिक डाटा दैट कैन बी यूज्ड इन कैलकुलेशन. ये न्यूमेरिक डाटा जिसको हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं उसमें करा जाता है. ऑटो नंबर, इट स्टोर एन इंटीजर दैट इंक्रीमेंट्स ऑटोमेटिकली एज यू ऐड रिकॉर्ड. ये क्या करता है? इंक्रीमेंट करता है. जैसे ही आप रिकॉर्ड करोगे तो क्या करता है? इंक्रीमेंट. करेंसी, it stores currency values and then display them in a different form. ये currency value को store करता है और उनको different format में क्या करता है? Different format में display करता है. Then OLE, they store graphics or objects such as Microsoft Excel worksheet or Microsoft Word document. Then we have yes or no. This can have only one or two possible value like yes or no, true or false or. Then we have hyperlink, the field with the data type that can store links to website or email address. जो क्या store करता है? Link करता है website and email address. Then we have attachment. This data type is used to attach images, spreadsheet files, documents, charts and other type of support to records in your database, much similar to the manner you attach the file to the lookup wizard. This creates lookup field जो क्या display करती है? Set of values. It helps you to create field whose values are chosen from value in other table. Some query or list of values. Calculation, field with this data type store result of the calculation. Calculation must refer to other field in the same. ये किसको refer करता है? To the other field in the same. Now field properties. What are field properties? Every field in a table has its property defined as characteristics and behavior. Let me have more.
control on data that can be entered in a particular. What are that field properties are as follow. These are some field properties. What are field properties? First is field size. This property can be set of fields with text or number data type. It sets maximum size of data stored in a field to accommodate x0 to 250. Numbers or auto number data. Then we have format. It controls the manner in which data get displayed. मतलब डाटा को कंट्रोल करता है इस मैनर में जिसको हम डिस्प्ले करते हैं. इनपुट मास्क. इट मेक्स डाटा एंट्री इजियर एंड कंट्रोल वैल्यूज विच अ यूजर कैन एंटर. ये उन वैल्यूज को कंट्रोल करता है जिसको यूजर क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है. Default value, this property is used to specify value that get displayed automatically when view records is made. ये हम क्या कहते हैं, इस वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं ऑटोमेटिकली जब नया रिकॉर्ड जो होता है वो क्रिएट हो. कैप्शन. दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू गिव अल्टरनेट मोर डिस्क्रिप्टिव नेम टू अ फील्ड. ये एक अल्टरनेट और मोर डिस्क्रिप्टिव क्या देता है, नेम देता है फील्ड. Then we have validation text. It is used to display an error message when a validation rules get violated. ये क्या करता है, एक डिस्प्ले करता है एरर मैसेज को जब जो वैलिडेशन रूल है वो वायलेट. वैलिडेशन रूल. इट इज यूज्ड टू पुट कंडीशन ऑन द डाटा दैट कैन बी एंटर्ड. इसमें हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन रख सकते हैं जिस फील्ड में आपको डाटा को एंटर करना. देन वी हैव डेसिमल प्लेसेस. It specify the number of decimal places for numeric data. कितनी number of decimal places है numeric data में जिसको display. It forces to enter a value required property is set for yes. Now allow zero length. It accept blank entry if required property is set for yes. ये किस तरीके के entry require करता है, accept करता है blank entry. Now record. The rows in a table are known as record. ये complete information को object या item की complete information को store करता है. Each record contains complete information about specific. ये क्या contain करता है? Record क्या करता है? Complete information. एक specific entity का कि क्या उसकी complete information है. Primary key, it is a field or combination of field that uniquely identify records in a table. It cannot have repetitive values and cannot be left blank. इसके repetitive value नहीं है और इसको हम blank नहीं छोड़. Views of a table. You can work on a table in two views, that is design view and data sheet. First is design view. We can enter field name, their data type and description. कि field name क्या है, क्या उसका data type है और क्या उसका description. The design view window is divided into two parts. First is field grid pane. It is used for entering field name and their data type. We can also give optional description about each field. क्या आप क्या देख सकते हो, optional description भी देख सकते. Then we have field property pane. This section is used to set properties for the field in the table. Data sheet view, it is used to enter data in a table. When we double click the table name in the database view, ये क्या करता है, data sheet view को open करता है. Switching between views, Microsoft Access जो होता है वो allow करता है to switch from one view to another. हम एक view से दूसरे view पे switch कर सकते हैं by following either of the two methods. First method is click on the view option in the view group on the home tab to change the design. Click on the design view data sheet button and right corner of the status. The next is creating a table. There are various ways of creating table in MS Access. First is creating tables in a design view, creating tables by using templates, and creating tables by entering data in data sheet. In this chapter, we will learn how to create table in a design view, that design the structure of table, specifying the field name, data type and their property. क्या उसका field name है, क्या उसका data type है और क्या उसकी property.
Now to create a table in a design view, first step is click on the create tab. आपको create tab पे click करना है. Select table design option in table group. आप select करोगे table design option table group. Enter the name of the field in the field name column. आप enter करोगे field name in the field column. Select the data type for a field from the data type. आप data type को select करोगे from the data type. Then use the field properties pane और आप क्या set करोगे properties for the what you will set properties for the. Now place the cursor on the field to be set as a primary. अब आप क्या करोगे cursor को place करोगे जिससे आप उस field को कैसे set करो as a primary. Click on the primary key option in the table group table design tab and the table. You will notice that a key symbols appear on the field. जो key symbols है वो आपके field पे appear. Type the name of table in the table name text. आपको अब name लिखना है table का, इसमें table name text. Click on the save button on the quick access toolbar or click the file tab and select save option. Save as dialog box appear. Now click on the OK button. अब आप किस पे क्लिक करोगे? OK button. The table is now added to the navigation pane. आप देख रहे हैं आप टेबल जो है आपकी वो navigation pane पे add हो. Now entering data in a table. After finalizing the structure of table in design view, we add records to it. हम add करते हैं records to it in a data sheet. To enter data in a table, now follow the steps. What are the steps? First of all, what you will do, you will open the table in the data sheet view by double clicking on it in the navigation. Apart from field, you will find a blank row with a asterisk symbol. Type a data in the appropriate field and press either the enter or a tab. अगर आपको नेक्स्ट फील्ड पे जाना है तो आप क्या करोगे? एंटर करोगे या एंटर की दबाओगे या टैब की दबाओगे. When the data is entered in a row, a new blank row will appear automatically and we can insert any number of records in the table. आप कितने भी number of records को टेबल में एंटर कर सकते. Adding records in a table. To add new record, अगर आपको new record add करना, हम 3 मेथड का यूज करते हैं. फर्स्ट मेथड है select the new button in the record groups on the home. आप new button को select करोगे record group में on the home. Method 2, click on a new blank record button on the record navigation. फिर method 3 क्या है? Simply आप start करोगे typing in a row below the last added record. Now to save a record. अगर आपको रिकॉर्ड को सेव करना है, क्लिक ऑन द सेव बटन. आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे इन द रिकॉर्ड ग्रुप ऑन द होम और आपका जो रिकॉर्ड है वो क्या हो जाएगा? सेव. नाउ वी हैव एडिटिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल. अब आपको जो रिकॉर्ड आपने कहा उसमें एडिटिंग करनी है. आफ्टर एंटरिंग डाटा इन अ टेबल, समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड टू मेक चेंजेस इन द डाटा. उसी को ही जो हम चेंजेस करेंगे तो हम चेंजेस करेंगे तो क्या होगा? एडिट होगा. इसको क्या कहेंगे? एडिट करेंगे. स्टेप 1, यूज द रिकॉर्ड नेविगेशन. आप रिकॉर्ड नेविगेशन बटन का यूज करोगे. फाइंड द रिकॉर्ड्स टू एडिट और डबल क्लिक द सेल वेयर यू वांट टू मेक. जहाँ पे आप क्या करोगे? चेंजेस. नाउ टाइप द इंफॉर्मेशन इन द फील्ड. अब आप क्या करोगे? फील्ड में इंफॉर्मेशन को टाइप करोगे. अब पेंसिल आइकन अपीयर टू इंडिकेट द एडिट. क्लिक आउटसाइड द रिकॉर्ड टू अप्लाई द चेंज. आपको क्या करना? रिकॉर्ड से बाहर क्लिक करना अगर आपको चेंजेस अप्लाई कर. नाउ डिलीटिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल. अब आपको रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है टेबल से. क्लिक ऑन द रिकॉर्ड्स दैट नीड्स टू बी डिलीटेड. क्लिक ऑन द डिलीट ऑप्शन इन द रिकॉर्ड बुक ऑन द होम. आपको किसको डिलीट करना है? किस पे क्लिक करना है? डिलीट ऑप्शन पे इन द रिकॉर्ड्स ग्रुप ऑन द होम. द सेलेक्टेड रो विल बी डिलीटेड. अब आपको करना है जो सेलेक्टेड रो है
उसको डिलीट करना। Sorting records in a table. First step is select the field on the basis of which you want to sort the record. आपको फील्ड को सिलेक्ट करना जिस बेसिस पे आपको रिकॉर्ड को क्या करना है, शॉर्ट। क्लिक ऑन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑप्शन, जिसमें आप शॉर्ट और फिल्टर ग्रुप ऑप्शन को यूज करेंगे। होम टैब पे जाते हैं, यहाँ पे होम टैब है, यहाँ पे आप जाएंगे और शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन आता है, वहां से आप शॉर्ट और फिल्टर कर सकते। ठीक है, ऐसे आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा और फिल्टर हो जाएगा। नाउ सर्चिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, एंटर अ पार्ट ऑफ ऑल द वर्ड्स, फ्रेज, डेट और नंबर इन द सर्च, द बॉटम ऑफ द एक्सेस। Access, highlight the corresponding characters in the first record that matches it. To find the next matching record, press the enter key again. आप क्या करोगे, दोबारे से एंटर की प्रेस। जैसे आप एंटर करोगे तो ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा। Access, find all records that match your search data anywhere in your data sheet. आपको देखना है कि वो कहीं भी डाटा शीट पे मैच कर रहा है या नहीं। Now you want to modify the table design. If you want to modify the table design, you can make changes to the design of a table after it has been created. Now inserting a new field. To insert a new field, open the table in design view and follow these steps. Place the cursor to the field before you want to insert a new field. Now click on the insert row option in the tool group on a table design under table. A new row is inserted. Enter the field name, data type and properties for a new. आप क्या करोगे, फील्ड नेम एंटर करोगे, डाटा टाइप एंटर करोगे और प्रॉपर्टीज को एंटर करोगे न्यू फील्ड। नाउ इफ यू वांट टू डिलीट अ फील्ड, अब हमें फील्ड को क्या करना है, डिलीट करना। टू डिलीट अ फील्ड, ओपन द टेबल इन डिजाइन व्यू एंड फॉलो द स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, you will place the cursor on the field before you want to insert a new field. Then click on delete rows option in tool group on the table design tab under table. Access display a warning box confirming whether you want to delete the field permanently. Click on yes. आप permanently delete करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो आप yes बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करें। This field is deleted from the table. और आप देखेंगे कि जो field selected है, ये वाली जो field है आपकी टेबल में से क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। देखो यहाँ पे अब है। Now identify the following option and write their names. You have to write the names of these options. Now our chapter has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today.